जाओ। Good morning, students. Good morning, sir. Today we are going to recite a poem, The Dust of Snow. Are you ready? Yes, sir. The way crow shook down on me, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood, has given my heart a change of mood, and saved some part of a day I have rued. and saved some part of a day I have ruled. The way a crow shook down on me, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood, has given my heart a change of mood, and saved some part of a day I have rued. and saved some part of a day I have ruled. तो डियर स्टूडेंट्स, इन लाइनों का पूरा हिंदी अर्थ मैंने सामने दिया है. प्लीज सी हियर. द वे ए क्रो, जिस तरह एक कोई ने, शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर झाड़ी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से. अब इसको हिंदी में पूरा वाक्य हम इस तरह करेंगे, जिस तरह एक कोई ने एक धतूरे के पेड़ से मुझ पर बर्फ की धूल झाड़ी. लेकिन इंपॉर्टेंट इज द रिसाइटिंग. सो रिसाइट दिस पोएम अगेन. The way a crow shook down on me, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood, has given my heart a change of mood, and saved some part of a day I have rued. and saved some part of a day I have ruled. Now we are going to learn the rhyming words of this poem. Pay attention to the word crow, snow. Crow, Are these rhyming words? yes, Me, tree. Are these rhyming words? yes. If we give crow A, we should give snow also A. If we give me B, we should give tree B. So the rhyming scheme of the first stanza is A, B, A, B. A, B, A, B. We can also call it above. A, B, A, B. In the same way, the rhyming scheme of the second stanza, heart, part, A, mood, root, B, B. In the second stanza, the rhyming scheme is the same, A, B, A, B. In this way, we can find the rhyming scheme of any poem. To find the rhyming scheme, we see the rhyming words of the poem. Okay, students, now recite yourself. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood, and saved some part of a day I have ruled. Oh, thank you very much. Thank you very much. Okay, goodbye. स्टार्ट. Now we are going to learn the meaning of each line. We will not learn word by word. We will learn line by line. The meaning of the first line is
द वे ए क्रो, जिस तरह एक कोई ने, शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर झाड़ी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। अब हिंदी में इसका वाक्य बनाएंगे, जिस तरह एक कोई ने एक धतूरे के पेड़ से मुझ पर बर्फ की धूल झाड़ी। ओके, एंड सी द सेकेंड स्टैंजा। हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दी, ए चेंज ऑफ मूड, मूड का एक बदलाव, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ ए डे आई हैव रूड, एक दिन का जो मैंने बर्बाद किया। अर्थात मेरे दिल को मूड का एक बदलाव प्राप्त हुआ, जिसने मेरे दिन के बचे हुए हिस्से को बचा लिया। नाउ टेक योरसेल्फ। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. Okay, thank you. Goodbye.